Hi guys. Today let's for a change talk about the differences between Indian management, or let's say Indian style of investing, and maybe the American style of investing. A lot of people say that it's similar. It's actually poles apart. It's quite amusing and difficult to understand, but दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. So I don't want to, one, two, three, point out the differences. But even, I mean, somebody like a Warren Buffett also makes mistakes. Although, why do we follow him, or why do we take lessons from what he's done, is because, I mean, the man has made $120 billion and counting of wealth from stocks and investments, right? So when somebody has made so much money and counting, you have to at least read him. बट देर आर सटल डिफरेंसेस जो मैंने देखे हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स अक्सर, वी सम ऑफ आर पीपल इन आर कंट्री, इट्स एक्चुअली अ ब्रॉडर टॉपिक. कुछ लोगों के माइंड में अभी भी वो कॉलोनियल हैंगओवर है, कॉलोनियल हैंगओवर कि इफ़ द वेस्ट इज़ डूइंग इट then this is correct, and if we do something then this is wrong. I think that is one thing which really kills the whole process. वो वैसा अगर आपका थॉट प्रोसेस है तो आप सिर्फ कॉपी कैट्स बन के रह जाएंगे. you'll never have some original thought. And history has told us that we are the people who have been inventing since beginning, but somewhere our own people have not followed the ethos. So I'll not go into history and mythology so much. I'll tell you the investing dynamics. For example, let's look at PE ratio, price to earning ratio. Technically, we have to cover it in our program. We have to tell the members, including premium members, that एक अच्छा PE ratio क्या range में होना चाहिए. But if you look at Indian companies and consistent compounders in Indian companies, सबका PE ratio आपको बहुत high मिलेगा. सो दिस इज़ वन डिफरेंस कि अगर आप यूएस के स्टाइल से इन्वेस्ट करेंगे तो आप पूरा मार्केट थोड़ा अलग. You cannot be completely dependent on their style, because they will look at low PE stocks, and PE is very important to them. Whereas in our investing paradigm, PE is important, but it is not the only criteria. जैसे हमारे प्रोग्राम में 36 में से 27 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं, विच वी ऑलवेज स्टॉक. इवन इफ़ यू हैव रेड द बुक 24 कैरेट स्टॉक्स, उसका पार्ट 1 आउट ऑफ 3 अभी पब्लिश हुआ है. आई हैव जस्ट सेंट आउट अ कॉपी टू आवर प्रीमियम मेंबर्स, एंड थैंक यू फॉर द फीडबैक. उसमें भी हम लोग ने यही बताया है कि ऑल दीज कंपनीज, द 24 कंपनीज दैट वी आर लिस्टिंग आउट, most of them are high PE. And yesterday I was having a word with our member, and he also pointed out that, what is the reason for having high PE. So the reason is, uh, the consistent compounders here, the investors are ready to pay that much high price for the earnings to compound every year. The PE multiple is very high, it's 80, 90, sometimes 100, but year after year investors are ready to pay that high PE, and that's why it doesn't go down, because it keeps on compounding every year at the same price. So ये फ़र्क है बुनियादी, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस लाइक दैट बिटवीन द वेस्टर्न बुक्स एंड द इंडियन बुक्स. इसीलिए व्हेन यू रीड और व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, like what we have done in our training program and membership packages is, we have taken best practices. हम कभी ये नहीं बोलते दैट वी आर करेक्ट, यानी इंडियन ही पढ़ो और इंडियन ही सब करेक्ट. नो, नॉट दैट वे. वी लर्न वॉट दीज गाइज हैव डन. वी लर्न द जापनीज ईथोज ऑल्सो, हाउ दे मेड मनी आउट ऑफ, लाइक कैंडल स्टिक चार्ट. आपको पता होगा सबसे पहले कैंडल स्टिक मेथड जापान से शुरू हुआ है, राइट? इट्स द ईस्टर्न मैनेजमेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. सो हर एक कंट्री का, हर एक इन्वेस्टमेंट साइकी का बेस्ट प्रैक्टिस होता है. वी कॉल इट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. एंड वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में से निकाल के हमने ये 36 क्राइटेरिया वी हैव काइंड ऑफ कलेक्टेड, एंड that's why it's very simple for us. 27 out of 36, if the criteria filters are passing, the stock is a buy, and it will remain a buy every year if you check the criteria once in a year. बॉडी का चेकअप साल में एक बार करते हो ना, वैसे कंपनी का या अपने इन्वेस्टेड स्टॉक्स का भी चेकअप एक बार साल में करो. रन इट थ्रू द क्राइटेरिया. आई थिंक इट शुड मेक सेंस. सेकेंड पॉइंट, वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड की बात बोलूँगा. वी ऑल फॉलो हिम, वी एडमायर हिम अ लॉट, बट he is not the only guy we might have read. We have read Phil Fisher, we have heard and learned from our very own Ramdev Agarwal. We have learned from Nilesh Shah, we have learned and read a lot of Indian books. Then The Wealth of Nations by Adam Smith. अभी उसमें जो बातें लिखी हुई है वो डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, बट a lot of amalgamation has gone into those criterias.
वॉरेन बफेट का एक मिस्टेक आपको पता होगा, 2015 he was buying airline stocks. He bought a lot of Southwest Airlines. And for the people who were connected to me, I think we were having a discussion, and you will identify on this video. We were having a discussion. That time I had told a lot of people around me, this was 6 years back, कि ये mistake है, ये नहीं करना चाहिए. And they were like, अरे you know better than Warren Buffett. I said no, I don't know better than him. I know what he only had said about the classic moat, MOAT, a perfect moat. I don't think the airline business is sustainable, and I don't think it can generate that much free cash flow. जो उन्हीं से हमने सीखा है, we are trying to implement that only. And see, last year in the pandemic, he sold a lot of stock. Buffett was selling all through, and most of his selling has come in the airline. He pulled out of Southwest Airlines because ultimately guys, अब यही फंडा आप इंडिया में लगाओ. अगर लोग बफेट को कॉपी करते 2015 में, जिसके वजह से इंडिगो, स्पाइस जेट एंड और दीज एयरलाइन कंपनीज स्टार्टेड स्काई रॉकेटिंग, वी विल नेवर एवर टच एयरलाइन कंपनीज फॉर द सिंपल रीज़न there is no guaranteed barrier to entry, and there is no guaranteed top line. There is no revenue का guarantee, profit margin stable नहीं है, business guarantee नहीं है. It's completely dependent on government regulation, fuel prices, salary levels. There are so many issues. So why would you want to get into sectors like telecom, airline, steel? अब metals की cycle चली है तो metals I can understand, but that's why we were having this interesting discussion. And even Buffett makes mistakes. So even the great man is he's human, he's bound to make mistakes, and he sold it off. He makes mistakes, but he corrects them faster than we can analyze them, right? So that is the difference. So anyway, what I was trying to say is, let's not get into the copy paste mode. Let's not copy the whole Western paradigm. Their paradigm is different, completely different. अगर आप लास्ट 90 years का रिटर्न्स देखेंगे, द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक प्रॉबली इन यूएस हैज़ बीन फिलिप मॉरिस. फिलिप मॉरिस इज़ नथिंग बट मालबोरो सिगरेट्स. और अब आप वो कॉपी पेस्ट इंडिया में नहीं कर सकते ना. आईटीसी एक ही लिस्टेड कंपनी है सिगरेट्स में, और अभी वो भी एफएमसीजी पैक में री रेट हो रही है, and it has not given you 1 lakh times returns, whereas Philip Morris has actually turned the money about 1 lakh or 2 lakh times. 2 lakh times returns in the last 90 years. So there is no copy paste that works in investment. It's a different country, different industries and different business models. आपको हर एक को अलग से एनालाइज करना है, एंड जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बिजनेसेस को समझ के इन्वेस्ट करना है, राइट? सो आई विश यू अ गुड वीक अहेड, एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट one thing you have to do always is keep profiting.